Hello bachcho, let's read the question. The question says the pressure P and the volume V of a gas are connected by the relation P V to the power 1 by 4 K, where K is a constant. Now we have to find the percentage increase in the pressure corresponding to a diminution of 0.5% in the volume. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें चाहिए वो है जो रिलेशन दिया गया है P V to the power 1 by 4 is equals to K, where K is a constant. अगर यहाँ पर प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होता है, सपोज P1 बन गया, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी चेंज होता है, P1 बन गया तो V की वैल्यू भी चेंज होगी. सपोज V1 to the power 1 by 4, it will also be a constant K. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P V to the power 1 by 4 is equals to P1 V1 to the power 1 by 4. That is लिख सकते हैं P upon P1 is equals to V1 upon V whole to the power 1 by 4. Now जो V1 दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, वो 0.5% डिक्रीज कर रहा है. So पहले अगर V था तो अभी 0.5% ऑफ V इसका डिक्रीज हो गया है. So V को अगर हम कॉमन ले लेते हैं so ये है 1 माइनस 0.5%. So 0.5 divided by 100. That's equals to V into 1 minus 1 divided by 200. That is 199 divided by 200 into V. So हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 divided by V is equals to 199 divided by 200. तो जो रिलेशन था वो था P divided by P1 is equals to V1 divided by V whole to the power 1 upon 4. So V1 by V जो फाइंड किया है हमने वो है 199 divided by 200 whole to the power 1 upon 4. So यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 जो है वो है 200 divided by 199 whole to the power 1 by 4 into P. So P की जो चेंज है डेल्टा P जो है वो है P1 minus of P. So P1 is 200 divided by 199 whole to the power 1 by 4 into P minus of P. So यहाँ से अगर P को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 200 divided by 199 whole to the power 1 by 4 minus of 1. That is equals to P into 0.001. तो अगर हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो परसेंटेज will be delta P divided by P into 100. So delta P जो है वो है 0.001 into P divided by P into 100%. So this is PP तो कैंसिल हो गया. So आंसर आ गया 0.1%. So the increase of pressure is 0.1%. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.